Hi everyone. Hi everyone. So we are live and you guys can ask me any doubts related to IT. Okay, whether it is your career doubt or related to any other stuff. Okay, so I'm happy to help you over here. So this session is going to be for next 30 to 40 minutes. So let's see how many of you are going to ask me questions. So I'm live. Let me check. Yes. Okay. Hello. Hi, Udit. So I'm just waiting for another 2-3 minutes. Yeah, belated Happy Diwali. साइबर तो पहला क्वेश्चन आया है आज. लेट मी सी. ये तो तबाही ब्लॉगर पूछ रहे हैं सर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना इजी है या हार्ड है. तो बेसिकली अगर देखो अगर आप पहले आईटी में आपने कोई स्टडी करी है जैसे बीसीए बीटेक थोड़ा बहुत लाइनेक्स अगर आपको आता है या फिर आपको लगता है आप थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाती है और आप उसको बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करते हो या मान लो अगर मैं लाइन जैसे मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत सारे लाइनेक्स को इंस्टॉल कर करके देखता था अपने लैपटॉप पे या वर्चुअल बॉक्स के थ्रू या वीएमवेयर के थ्रू. तो क्या आपके अंदर वो आईटी का कीड़ा है बेसिकली अगर सीधी बात बताऊं तो कि लाइक डू यू एक्चुअली एक्सप्लोर like other different things in IT. So then cyber security is going to be good for you. If you know a lot of softwares already, because AI market is growing, AI tools are there in the market. So क्या आप AI tools को बहुत यूज कर रहे हो? क्या बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर रहे हो? तो अगर आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हो, अगर आप एक स्क्रिप्ट किडी हो, एक टर्म यूज होती है साइबर सिक्योरिटी में, स्क्रिप्ट किडी. तो स्क्रिप्ट किडी क्या होता है कि सॉफ्ट बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं उसको यूज करके थोड़ा बहुत इधर उधर से नॉलेज लेके आप थोड़ी बहुत चीजें जानते हो तो डेफिनेटली देन मेरे ख्याल से साइबर सिक्योरिटी इतना मुश्किल नहीं है. बट अगर आपको कभी आईटी का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आपने कभी बहुत ज्यादा बेसिक्स जो मैं बता रहा हूँ बेसिक आईटी के या सॉफ्टवेयर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो डेफिनिटली थोड़ा शुरू में टफ लग सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी एवरीवन हैज़ टू पिक अ डोमेन, राइट? तो मुझे आज नहीं तो कल मुझे करियर बनाना है, वो किसी ना किसी चीज़ में मैं बनाऊँ, है ना? तो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है? तो गाइस जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं सो दिस इज अ Q&A सेशन. तो अगर आपको कोई भी करियर से रिलेटेड डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हो. वेदर यू आस्क मी इन इंग्लिश और हिंदी. इफ यू आस्क मी इन इंग्लिश आई विल रिप्लाई इन इंग्लिश. इफ यू आस्क मी इन हिंदी आई विल रिप्लाई इन हिंदी. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी बोथ द लैंग्वेजेस. या तो एक संकेत इज आस्किंग व्हाट्स द प्रॉपर नेटवर्क इंजीनियर रोड मैप एंड करियर. See, first of all, like we have already built a website called roadmap.nwkings.com. If anybody wants to see a roadmap, so you can see on the screen. तो ये आपका एक रोड मैप है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे लाइक अगर आप लाइक इफ यू वांट टू बिकम नेटवर्क इंजीनियर, so first there is a course called CCNA Foundation Program. Then you go for CCNP Core and an RC. So this is what we call CCNP Enterprise. Then you go for Palo Alto Firewall, or you can go for FortiGate Firewall. So FortiGate has two levels, and Palo Alto has also two levels: PCNSA, PCNSC, and FortiGate also has an SC and SC7. So means when you learn, so you
need to learn in detail. Okay, so this is what we cover at networkings in live courses, and after that, this is add-ons. You can learn F5 LTM, you can learn CCNP security, and further, like you can also go for SD-WAN. So ये धीरे 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 like you have to learn. So if you ask me just a few things, then CCNA, CCNP, okay. Then you take any firewall. Let's take Palo Alto because that's Palo Alto PCNSE, PCNSE, and then you go for SD-WAN. Okay, so learn the first row. This is what I want you to learn. Okay, you can take a screenshot of this. So first ये पांच चीजें, ये चार चीजें CCNA, CCP, Palo Alto, SD-WAN. First you complete this, and then you discuss on like उसके बाद आपको क्या करना है. You guys like you can contact networkings, or you can find me on LinkedIn. You can ask me further. Okay. So this is going to be English or Hindi. So if you ask me in English, I'll reply in English. No worries. Okay. Okay. So this is the website. You go and check, guys. Roadmap.nwkings.com. And like if you don't know what is like Python for network engineer course, so you can see. And now, just to let you know that I'm going to start a Hindi batch, but if you are highly, highly interested, so I'll ask you to WhatsApp on one number, but not right now. If you stay with me, you guys can join my live batch. Okay, so just stay with me for next 20-30 minutes. I'll tell you how you can join my live batch of CCNA CCNP if you are interested. Okay. So the next question comes, hello, sir, I have taken Palo Alto and Checkpoint Firewall. So this is Shankar, sorry. So Shankar is asking, sir, hello, sir, I have taken Palo Alto, Checkpoint Firewall and AWS course. Should I get resume forward? Can you please provide? Okay. So what I tell you all, like if you want to build a good resume, so there are a lot of resume making websites available in the market. You guys can try any of the website, okay, whether it is Enhancer, Enhance CV. So you just need to find out what is, okay, so like this is the website resume.io. I have not tried earlier. Create my resume. You can pick any template, whatever you like. Okay, suppose I like this template and then created. So I'm just showing you that upload your resume. So if you have already a resume with yourself, तो मैं यहाँ से कुछ like if I have someone, okay, okay. So it's asking me prompt, but you guys can upload from here. You can enter your email ID and all, and then it will build a resume for you. Okay, so so use any software if you ask me. Okay, so I have taken Palo Alto Checkpoint and AWS. Should I get resume format? Okay, so if you're asking me not the design part, if you're asking me what skill should you add, then definitely what you learn in Palo Alto. Like if you learn Palo Alto, like PCS, SA, and then you have Checkpoint knowledge, CCSA, and AWS Solution Architect. I'm expecting you have knowledge. Okay, so you go to any AI chat GPT or whatever you like. Okay, so just so give me resume summary that I know these skills. ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है, so just whatever you know, you just ask chat GPT or something that please create a summary, and then you can add in your resume. Okay, so you can see certified network and cloud security professional. Okay, with expertise in Palo Alto, Checkpoint, and AWS solution architect, skilled in designing, deploying, and managing. So whatever you know, so there are, it's giving me three options. So whatever I want to pick, I'll pick according to this. And if you want to build more, like if you want to add more topics, okay, so give me topic names of these courses. So I'm sure you already know this because you have done these courses. तो आपने ये सब पढ़ा होगा that you know how to do inter like
NAT policies, app ID, user ID, content ID, URL filtering, zone high availability, global protect. So if you know all these things in Palo Alto, okay, now create a long summary or lengthy summary for my resume. Okay, so this is how you guys can add a summary if you know a lot of things, and this is what you can add in your cover letter also when you apply for jobs. So what is cover letter, that I'll cover maybe next video. Okay, because it's a live session, so I'm here to take your doubts. Not I'm not teaching right now. I'm just guiding you all. ओके, तो जिसको जो भी तो ऐसे मैं कह रहा था, जो भी आपको आता है तो वो आपने पहले उसके टॉपिक का जो भी आता है ना, एक एक चीज आपने रिज्यूमे के अंदर डालना है। और एक चीज बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, जो नहीं आता है वो रिज्यूमे अंदर डाला हुआ है। तो मान लो अगर मुझे 50 चीजें आती हैं, तो मैं वो जो सबसे बेस्ट मुझे 50 में से 25 चीजें आती हैं, मैं वो 25 को रिज्यूमे में बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट करके दिखाऊंगा। सपोज इफ आई एम गुड एट ओएसपीएफ, आई एम गोइंग टू हाईलाइट ओएसपीएफ एट मल्टीपल प्लेसेस इन रिज्यूमे। If I'm not good at, maybe suppose if I'm not good at any topic, maybe suppose let's take an example that if I'm not good at BGP, so I'll not add much BGP topics in my resume. But if you are very confident about any skill, you add lot of things about that particular topic. Okay, so why I'm telling you all this, because when you go for interviews, the interviewer is almost blank when he takes your interview. So if I'm taking your interview, I don't have any topic, what topic, or I can't remember all the topics. What should I ask you, right? So what should I ask you? I check your resume and I see, oh, do you know this? Okay, let me take. So 90% of interviews comes from by looking at your resume. ठीक है, तो मोस्टली 90% रिज्यूमे आपके इंटरव्यू को देख के आते हैं। ठीक है। ओके, सो उदित, next question, Udit Sharma. Which field is better to go in, DevOps or cybersecurity? See, both are good and both are combined together. That's called DevSecOps. Okay, so if you don't know what is DevOps or DevSecOps, so you start with cybersecurity and slowly you learn DevOps, and then you can get into very good roles in the market. They are called DevSecOps. So DevSecOps is one of the highest paying job role right now in the market. But yes, you start with cyber security first. I think spend 1 year in cyber security or 2 years in cyber security. Also, guys, we recently uploaded a yeah, so we recently uploaded a podcast on our channel. You check with this guy. He has 13 years experience into cybersecurity. Okay, Shivam. So he's telling you that what courses are good for cybersecurity and all, and how he was network engineer, but now he has transitioned into from network to cyber. So he became from network engineer to cybersecurity expert. He is going to tell you the journey, what he has done, all these things. Okay, so you keep looking at our podcast is, so we have done multiple podcasts with a lot of people. Those, if you want to get into DevSecOps, so there is a podcast also with a guy with the Kash. He is a DevSecOps engineer. So watch these because they are from the industry and they are telling you how to get into data center job, how to become a Azure expert, how I'm going to get into cyber security. So you keep watching these podcasts because these people have some good experience in IT. So you learn something from them also. Okay. So if you ask me in short, DevOps or cyber security. So if you are a beginner, if you are a fresher, you start with cyber security, slowly learn DevOps and get into DevSecOps role, because DevSecOps role is very prominent in the industry right now. Okay. So if you start today, maybe it will take time. मुझे नेटवर्किंग से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कोर्स करा था, तो सपोर्ट में बोलो। आई कांट मेक योर सर्टिफिकेट हेयर इन लाइव सेशन ब्रो। सर मैंने आपके पास से सीसीएनए करना है यूट्यूब से, तो मुझे सीसीएनए की नॉलेज है। ओके, सोच समझ के लिखो। एक्चुअली लुक्स लाइक यू आर पुटिंग हाफ कमेंट्स। ओके,
Sir, I have question. I have 1.5 years of experience as a network engineer. What should I focus more to grow more? Focus more to go. Also, I get very demotivated due to my notice period. Everyone wants. See, don't be demotivated. If you talk about my companies, I worked with 4 to 5 companies, and in all the companies, like I had 3 months notice period, and still I got a job at Juniper Networks. I worked for Apple. I worked for TCS. So I worked with top MNCs and top-notch product-based companies. Okay, so even I had 3 months experience. So if you are very good, companies will wait you for 60 to 90 days also. Okay. So how to tackle? So that's it. I told you if you are very good, okay, if you are applying in very good companies, they are ready to like wait you for 60 to 90 days. So no need to worry about notice period. Just focus on that I should improve my skills. I give good interviews and notice period is not in your hands, right? You cannot get absconded and join without sharing your experience letter of previous company. है ना? तो अगर आपको नई कंपनी में जाना है भाई मेरे, तो नोटिस पीरियड भूल जाओ। आप ये अगर एक लाइक माइंडसेट अगर आपने बना लिया ना कि मेरे नोटिस पीरियड की वजह से जॉब नहीं मिल रही, तो आप गलत हो। अपने आप को जाके देखो कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हो, तो कंपनीज़ 2 महीने क्या 3 महीने भी वेट कर लेंगी। ठीक है? Okay, so the next question is, could you guide me what skills I should focus on and what order to grow in networking and modern enterprise network infrastructure? Okay, so I have already shown that you go and check this website nwkingsroadmap.com. You can see. Okay, so this is the roadmap I want you to follow. CCNA, CCNP Enterprise. There are 2 modules in core and RC. Then you learn Firewall, and after that you can learn SD-WAN. So these 5 programs you can start, and then slowly you learn about F5 LTM. You learn about CCNP security. There is a CCNP data center also, and checkpoint also. Then you go slowly further into network automation. So at least 5 topics I would recommend you: CCNA, CCNP, firewall, SD-WAN, and then you can shift to network automation because you have to take like you need to be more speedy that within 1 year I'll complete CCNA, CCNP, firewall, SD-WAN, and the second year onwards I'll completely focus on network automation. Because if in 2025, 2026, in 20 next year, if you are not learning network automation, you are going to lose maybe your networking jobs. Okay, so whether you have to learn cyber security things, okay, because network engineer will move into cyber security, DevOps, or cloud security, or they will move completely into network automation. If you stay as a network engineer only, so then you will not get too much good salaries in the market because to get higher salaries in the networking sector right now, you need to learn network automation, you need to learn cloud security, you need to get DevOps knowledge nowadays. Okay. So network, cloud, cyber security, DevOps, they all 4 technologies are interlinked with each other. That's why what we teach at networking. सर आपके नेटवर्किंग कोर्स जितना यूट्यूब पे पड़ा है उसके वो परचेज करने से एक्स्ट्रा सी अगर आपको नेटवर्क में जाना है और अगर आपको प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर या फिर साइबर सिक्योरिटी से पहले लाइक यू वांट अ नेटवर्किंग जॉब, देन यू कैन जॉइन माय बैच। बट इफ योर गोल इज साइबर सिक्योरिटी, then no need to join my batch. My YouTube CCNA knowledge, basic networking knowledge is required. Directly, you can join cyber security batches. How we transition from networking to cybersecurity. Nikhil, see, there are 2 verticals in the networking. So one is called red team, one is called so in networking's website, if you go to nwkings.com, there is a cybersecurity
thing, and you see there are two programs, red team and blue team. So first you need to decide which program you want to get into. So if you want to get into SOC, which is Security Operations Center and all, then you go and join this blue team where you learn a lot of things about you learn about I would say Splunk, you learn about QRadar, you learn about Defender, Sentinel, lot of things in the blue team. It is a combination of basic security plus. It has Splunk, it has Azure SC200, okay, and it has a complex one called CVLC. So basically, it is a bundle of four modules, and this is very good if you want to get into cyber security. These are the four programs what you learn. So whether you learn live from networking or you join like you watch recordings and all. Okay, so that up to you. So this is the roadmap if you want to get into blue team. And if you want to get into red team, which is called bug bounty or ethical hackers, penetration testing engineers, vulnerability assessment, penetration tester, then red team program would be better for you. So where you not learn just basic ethical hacking, you learn certified ethical hacking version 13 practical. So this is around 6 hours exam. You need to crack this. And then this is a CompTIA pen test exam. So these three all penetration testing certifications, and then you get into red team or what we call penetration testing and all. तो आप देखो कि मुझे attacks like I really love to learn lot of tools. I want to see how attack happens or how I'm going to defend my company network, because in simple words in red team you learn lot of penetration testing things, or you try a lot of softwares, find problems, and try to exploit your own company so that your company will protect from attackers. Basically आप ऐसे हैकर बनते हो जो कंपनी के खुद के नेटवर्क को बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपको वर्नेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम समझ आएगी, फिर उसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है? मतलब आपकी कंपनी की एप्लीकेशन, whether it is mobile application, whether it is your servers, Linux servers, Windows servers, because every technology or every app on this internet needs security, right? तो वहां पर सिक्योरिटी अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बग बाउंटी वगैरह में जाना है, सो गो फॉर रेटिंग. एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू मॉनिटरिंग, यू वांट टू monitor the attacks, you want to analyze what's going on. And yes, if you ask me, 70% jobs in the market are for blue team, 30% jobs are for red team. ओके, सो इफ यू आस्क मी इन इंडस्ट्री, तो 70% जो जॉब्स हैं भाई मेरे वो ब्लू टीम में है, और 30% जॉब्स आर इन द रेड टीम. सो इफ यू आर ए फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो, गो ज्वाइन ब्लू टीम प्रोग्राम फर्स्ट, then go for red team. And if you are already like good experience in IT, you know, you are already working as a network engineer, or you already worked on Palo Alto firewall or something like that, and or maybe you have lot of interest to get into ethical hacking or penetration testing, then join red team. तो ऐसा नहीं कि फ्रेशर ज्वाइन ना करे, पर हाँ इसमें जॉब्स लेना थोड़ा टफ हो जाता है. सॉक वाली जो जॉब्स होती है ना, ब्लू टीम मीन सॉक सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, वो बहुत कंपनीज बैंक्स बहुत सारे लोग सॉक इंजीनियर्स को हायर करते हैं. सो देन यू कैन गो फॉर साइबर सिक्योरिटी ब्लू टीम प्रोग्राम. हाय अंकुर, क्या हाल है भाई? ये बहुत पुराने स्टूडेंट अपना. ओके, तो नेटवर्क इंजीनियर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, पर सुन, सो सी, डोंट गो फॉर डेजिग्नेशन नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क security engineer, or some companies say network administrator, some companies say technical support engineer, some companies say L2 network engineer. So don't go for positions, just check what you are actually doing. Okay? So CATV engineer familiar with traditional broadcast system, what would you suggest for professionals like me who want to adapt and build a career in OTT industry? See, I'm not into that IPTV, all those things. Okay, I've not studied much about that. Okay, but if you talk about broadcast systems, all these things, uh, so totally depend on your knowledge. Like if you want to upgrade your knowledge, you can start learning cyber security. At the end of the day, every network, whether it is
broadcast systems or whether it is networking or cloud, everyone needs security. So I think, Pranay, you can start learning cyber security. You can start with the blue team and then go for red team. Okay, or you can try as a network engineer also if you are already experienced. सर CCNA सर्टिफिकेट बेटर और CompTIA नेटवर्क प्लस बेटर है इफ आई वांट टू फोकस इन साइबर सिक्योरिटी करियर। सी दोनों सर्टिफिकेट लेने देखो, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हैं भाई, दोनों ले लो। ठीक है, सिंपल बात है। तो अगर सर्टिफिकेट से पर साइबर सिक्योरिटी में अ, मतलब अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आई थिंक आपको CCNA सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओके, नेटवर्क प्लस की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको जाना है साइबर सिक्योरिटी में, गो फॉर कॉम्प्टिया सिक्योरिटी सर्टिफाइड, CH सर्टिफिकेशन जा सकते हो। कॉम्प्टिया पेन टेस्ट की सर्टिफिकेशन है। तो ऐसे ये वाली सर्टिफिकेशंस में जा सकते हो। तो CH बहुत चलता है इंडिया में। आई हमें भी, हम वी आर आल्सो ऑफिशियल पार्टनर। तो बहुत कम, बहुत यूएस के लोग हैं जो वो ईसी काउंसिल को पसंद नहीं करते, उन्होंने अलग अलग वो है, पर इंडिया में CH की बहुत वैल्यू है। ठीक है, इवन दो उससे भी बहुत ऊपर की सर्टिफिकेशन है मार्केट में, OSCP लेवल करके है। ठीक है, OSCP है, उससे भी ऊपर एक एडवांस वर्जन है उसका। तो बट यस, अगर आप बिगिनर्स की बात करो, 2 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाले, वहां पे CH नॉलेज स्टिल रिकमेंडेड। आशीष झा, so there are so many courses. Someone should go for data center, SDWAN, DevOps, cybersecurity, or one should stay that we should have knowledge for all, but it is impossible to have knowledge of everything. Bro, I know, but see, मैं तुम्हें एक सच बात बता रहा हूँ दिल से, कि देखो अगर आप मल्टी स्किल्ड नहीं होगे ना, तो कंपनीज को टाइम नहीं लगता है किसी को भी फायर करने में। आपने सुना होगा बड़ी से बड़ी कंपनी फायर कर रही है, तो कल को जॉब सिक्योर करना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हो चुकी है। आजकल जो नेक्स्ट ईयर होगा 2025 में, एक बार आप स्टडी पढ़ो जाके, कितनी कंपनीज ने कितने लोगों को निकाला है। ठीक है, वेदर इट इज, चाहे वो कोडिंग में थे, चाहे वो बेसिक जॉब कर रहे थे आईटी में, या फिर कोई भी जॉब थी। ठीक है, तो बहुत लोगों को ले ऑफ हुए हैं। तो हमें हर चीज नहीं आ सकती, वो मैं भी मानता हूँ। मैं लाइक मुझे सिस्को आता है कुछ थोड़ा बहुत, लाइक बेसिक साइबर सिक्योरिटी आती होगी, जूनिपर आता है। ठीक है, बट मुझे डेवऑप्स नहीं आता मान लो। मुझे क्लाउड आता है, बट मुझे साइबर सिक्योरिटी का कोई बहुत एडवांस वर्जन नहीं आता। ठीक है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यू शुड बी जैक ऑफ ऑल। थोड़ा थोड़ा आपको सब आना चाहिए, बिकॉज जब आपकी जॉब लग जाएगी, फिर तो जो कंपनी में आप जा रहे हो, सपोज आपने एसडी वैन पढ़ा, ठीक है, डेटा सेंटर पढ़ा और आपकी जॉब लगी, और वहां पे एसडी वैन तो यूज हो रहा है, बट वहां पे नेटवर्क ऑटोमेशन भी यूज हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, एसडी वैन से आपकी जॉब लगी, नेटवर्क ऑटोमेशन पढ़ोगे अब। तो दो तरीके से पढ़ना होता है हमें, एक तो जॉब चेंज करने के लिए पढ़ना होता है, और दूसरा पढ़ना होता है मेरी करंट कंपनी में जो चीजें चल रही हैं, मुझे वो भी तो सीखनी है ना। क्योंकि मैं 4 साल, लोग क्या गलती कर रहे हैं, एक कंपनी में 5-5 साल बैठे हैं, और 5 साल के बाद भी वो ये नहीं बता सकते कि उनकी कंपनी का नेटवर्क कैसा है। उन्होंने अभी 5 साल से उस इंडस्ट्री में, या 5 साल से उन्होंने कंपनी में करा क्या। तो वो वही कहते हैं कि ट्रबल शूट किया हमने, हम तो बेसिक काम कर रहे थे, हमसे तो सब काम करा रहे थे। सो यू नीड टू फिगर आउट एक्चुअली कि मैं जिस भी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वेर एवर आई एम वर्किंग, इफ आई एम गिविंग माई 3 years, 5 years to a company, if I am taking something out of it or not, क्या मैं उस कंपनी से वो नॉलेज लेके जा रहा हूँ जिससे मेरी आगे 2 गुना 3 गुना सैलरी मिले। तो अगर नहीं मिल रही है वो चीज, और तो आपको खुद सीखना होगा। कोई आपको आके स्पून फीड नहीं करेगा कंपनीज में, कि आप सोच रहे हो। और अब बहुत लोगों की रोने धोने की शक्लें रहती हैं, यार मेरी कंपनी में तो कोई सिखाता ही नहीं है, मेरा तो कोई सीनियर मुझे कोई नॉलेज ही नहीं दे रहा है, सब लोग मेरे से जलते हैं। हाँ, तो तुम ऐश्वर्या राय हो नेटवर्क इंजीनियर्स का। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो डोंट बी लाइक, दो तरह के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले और एक एवरेज माइंडसेट वाले। एवरेज माइंडसेट वाले देखना, बहुत कई दोस्त भी होंगे आपके, वो हर चीज में रोते हैं। उनको कोई बड़ी से बड़ी अच्छी जॉब भी मिल जाएगी तो भी वो रोते हैं। ओके, if they get, like even if they are getting high salary, still they are complaining always. So don't be like that uh, average guy that you always find mistakes in anyone.
तो पहले तो खुद की गलतियाँ भी निकालते हैं, फिर वो अब दूसरों की भी निकालते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जिन लोगों से मैं मिला या जिन्होंने मेरे साथ काम किया पास्ट में और आज 1-1 करोड़ के पैकेजेस पे भी बैठे हैं, कुछ लोग 80 लाख, 1 करोड़ पे भी बैठे हैं पैकेजेस पे और हमारे ट्रेनर्स खुद बहुत अच्छे पैकेजेस पे हैं। तो मैं जब भी कोई बहुत अच्छे बंदे से मिलता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि सबसे फर्स्ट चीज़ जो सबके अंदर होनी चाहिए ना, वो होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड या जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। जिसके मन में ये नहीं होता कि यार ये पढ़ना है, अच्छा ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छा ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं। उनका होता है भाई कुछ ना कुछ चाहिए मुझे पढ़ने के लिए। मुझे ग्रो करना है लाइफ में, मुझे अपनी फैमिली को बेटर चीज़ें देनी है, उनका लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? So don't be like a loser, okay? Don't be like average guy. I would highly recommend you start becoming that extraordinary person in your life कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, मुझे मैं जितना अपना पोटेंशियल मैं कॉलेज से पढ़ा था एक, ठीक है? तो हमारे कॉलेज की ना टैगलाइन थी एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। तो चित्कारा यूनिवर्सिटी ये करके है पंजाब में। तो एक्सप्लोर योर पोटेंशियल का मतलब है कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, बट हम यूज़ नहीं कर पा रहे। हम हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं 4-4 घंटे की, ठीक है? तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर आने वाला है, ठीक है? 2026 तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर ही कुछ करूँगा। अभी ये सोचो नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट मैं वो कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ। सपोज़ मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो मैं नेक्स्ट 2 महीने सीसीएनए पढ़ लेता हूँ या मैं लाइनक्स पढ़ लेता हूँ, ताकि मेरा बेस बन जाए एंड नाउ फ्रॉम 2026 आई एम गोइंग टू गेट इंटो माय कोर रोड मैप, ओके? So what's your insights for 10 year of experience person? Anand, please be like I just want you to add more details what you're asking. I work in DC and I have CCNP level knowledge. I have knowledge basic of Hyperflex, UCS and Access. Now wanted to do DevNet, but I'm unsure whether to deepen my data center skills or switch to DevNet. See, that Golden Kumar. Okay, see, if you already have good data center knowledge, nobody is perfect in this world. And there is a saying, what I created, perfection is distraction. Okay, if you keep building that, I want to get an expert in data center technologies, all these things, I would highly recommend you. Like if you already have data center knowledge, like you can learn cloud security, okay, which is Azure cloud security. You learn Azure 104, 500, 700. Okay, learn cloud portfolio first. Okay, learn Linux, then go and learn network automation. Okay, so before going into network automation, because data center people, like if they learn cloud security or cloud roles, you have high chance to get a job into AWS or maybe Azure big brands because you already have a data center knowledge. With cloud knowledge, you can crack good company interviews and slowly transition into network automation also. Okay, if you want, network automation is also not bad. Directly you can get into network automation also. Okay, so if you want to learn everything, because people are asking me, sir, what should I learn? Because lot of batches I can't afford. You go and join this all access pass. It has all the content of CCNA, CCNP, firewall, SD-WAN, DevOps, data center, network automation. तो आप यहाँ पे जाके ना ट्रायल यूज करो इसका, ओके? स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, वॉच 2 to 3 videos from this. So whatever you like, because I told you you learn 104, 500, 700. So you start watching these videos of 104, like 1 or 2 videos, then watch 1, 2 video of 500, 700. So then you will get an idea that yes, I wanted to learn this or not. Okay, so because live batches definitely takes time, but if you want to learn a lot of things and you have ample amount of time, you can learn from office, you can learn from like anywhere you are. You can download the mobile app and watch all our videos and all. So then you can go for this bundle, and lab access is also available with this bundle. Okay, so you guys check with my team or start with. I'm sharing this link all of you.
सो आप ट्रायल ले सकते हो यहाँ से, ट्रायल लेके लाइक यू गाइस कैन ट्राई. ओके, थैंक यू. एंड नेक्स्ट, sir, I have 1.5-year experience as a network engineer. What should I focus? See, if you already have CCNA, learn CCNP and firewall. If you already have CCNA, CCNP knowledge, learn firewall, SD-WAN. If you already have CCNA, CCNP firewall knowledge, then learn SD-WAN, learn F5LT, F5LTM, then learn network automation. ठीक है, तो रोड मैप पे जाओ, ये वाली nwkingsroadmap.nwkings.com. तो यहाँ पे देखो ये सीसीएनए सीसीएनपी क्या क्या मैंने कर लिया है. ओके, व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट इज लेफ्ट. So first get most out of it from the networking world. So once you are good at networking, then slowly you start learning cloud security. तो cloud security बहुत जरूरी चीज है. Okay. Hello, sir. In my company, we are planning to buy a new firewall. Which one should I buy? Can you give me suggestions? Should we go with Palo Alto or FortiGate? See, Palo Alto is like the best firewall in the market, but it is also very costly. FortiGate is also very good firewall and also affordable. So totally depends on your company budget. If you got a responsibility to buy, I'm sure you are working for a startup. And if you are working for a startup, then go for FortiGate firewall. That's going to be better. US programs available. What does it mean? I have 10 years of experience in LAN and wireless, but little exposure to SD-WAN, AWS, and firewalls. Could you please guide me on what skills and certification I should focus on for the next 3 to 5 years? I think you're already done with that routing, switching stuff, Anand. CCNA, CCNP. I can see you have some firewall knowledge. Anand, go directly क्लाउड सिक्योरिटी डोमेन ब्रो, बिकॉज यहाँ पर आपको फ्यूचर दिखेगा. लर्न एज्योर 104, लर्न एज्योर 500, लर्न एज्योर 700. Okay, so Azure portfolio, or you can go for AWS solution architect, AWS security, or AWS network specialist. So there are three bundle program for Azure and three AWS. So you can pick any of that, and that's available as a live batches, and also it is available in all access pass. You can start. So, like if you can revise your CCNA, CCNP Palo Alto knowledge from here, and also you can start learning about cloud security and network automation from this bundle. Okay, so you also try that trial, and if you like it, then team will connect. Sir, with the AI growing at what exactly? Yeah, AI आ रहा है, but AI हाँ हमारे से related नहीं है. Okay. Sir, with AI growing at breakneck speed, do we need to have specific skills with subject matter expert or get away with gaining skills? See, AI हमारे लिए नहीं है. We guys, if you are watching this channel, you guys are in the field of IT infrastructure. यानी हम लोग आर्किटेक्ट हैं. समझ रहे हो? जो घर बनाते हैं समझो. जैसे आप घर का डिजाइन कैसा भी आ जाए मार्केट में, है ना? कि ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, तो जो आर्किटेक्ट्स हैं, है ना? तो वो चेंज नहीं होंगे. समझ रहे हो? तो एआई क्या एक एप्लीकेशन है, टूल है, सॉफ्टवेयर है. बट अगर हम बात करें एआई के कुछ टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है? मॉनिटरिंग टूल्स हो गए एंड ऑल. बट इफ यू टॉक अबाउट नेटवर्किंग स्पेसिफिकली और एनी थिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है? तो जो मैं आपको बता रहा था कि एआई एक टूल है, सॉफ्टवेयर है जो कोडिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, बट एआई इंस्टॉल कहाँ होता है? दिमाग लगाओ. You install AI softwares in servers, you need GPU cards and all. At the end of the day, like you put AI softwares or tools in the cloud. And how you build a cloud? You buy routers, switches, servers, and you combine. So still networking is required. Okay, still networking, cyber security, cloud security. Security is always required, right? So AI cannot provide security. AI is a AI is simple artificial intelligence, now where humans are not using their brain, you are asking machine to use their brain.
ना? तो मशीन कहाँ-कहाँ दिमाग लगाएगी, तो वो देख सकते हो आप। हाँ, नेटवर्किंग में काफ़ी सी सारी चीज़ें एआई हो सकता है कर रहा है या कुछ-कुछ कर रहा है, ठीक है? बट हर कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो ये है कि एआई पढ़ो, मैं तो ये कहता हूँ कि लाइक यू स्टार्ट लर्निंग क्लाउड, स्टार्ट लर्निंग डिप्लॉयमेंट्स, ओके? But if you are in the network, cloud, cyber domain, you should focus on your current updated skill. या तो आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छे से आता है, क्लाउड आपको पूरा आ गया, डेवऑप्स पूरा आ गया है, साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक जानते हो आप। अगर आपको ये सारे डोमेन आते हैं, तब डेफ़िनेटली कुछ एआई में एलएलएम मॉडल, मशीन लर्निंग ये सब पढ़ सकते हो आप। बट जो क्या आपको नेटवर्किंग में सब कुछ आता है? क्या क्लाउड सिक्योरिटी में आपको सब आता है? क्या साइबर सिक्योरिटी या डेवऑप्स आपको आता है? तो अगर नहीं आता तो पहले ये 3-4 जो डोमेन्स आपस में इंटरलिंक्ड है ना, उसको पढ़ो। एआई मशीन लर्निंग बहुत कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं, ट्रस्ट मी। दे पेड 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs fees to some training companies. They were learning data science. कुछ लोग डेटा साइंस पढ़ रहे थे, उनको समझ नहीं आया। कुछ लोग मशीन लर्निंग में चले गए कि भई मैं 3 साल से नेटवर्किंग की जॉब में था और मैंने वो डेटा साइंस का कोर्स ले लिया सर कि डेटा साइंस फ्यूचर है। और वो दोबारा 6 महीने वेस्ट करके दोबारा वही नेटवर्किंग में आ गए। तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, एलएलएम, ऑल दीज़ थिंग्स व्हाट यू हर्ड जो भी आपको सुन रहा है ना, ये हाइप है अभी और डेफ़िनेटली बहुत जॉब्स होंगी इसकी फ्यूचर में मार्केट में, अभी भी हैं कुछ हद तक, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा फ़ील्ड ही छोड़ दो। जिस जिस प्रोफ़ाइल से आप कमा रहे हो, द प्रोफ़ाइल व्हिच गिव्स यू सैलरी, व्हिच गिव्स यू ब्रेड एंड बटर, तो ऐसा नहीं है उसको आप बिल्कुल ही त्याग दो या उसको बिल्कुल ही छोड़ दो कि भई मैं तो जा रहा हूँ एआई सीखूँगा, मशीन लर्निंग सीखूँगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप कॉलेज में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, डेफिनिटली यू स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ऑन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एलएलएम। तो मेरा कज़न है, कनाडा में है पिछले 5-6 साल से, ठीक है? प्लस 2 करके चला गया था यहाँ से एंड उसने डिग्री भी जो है उसकी एआई मशीन लर्निंग में करी है। फुल स्टैक वगैरह पढ़ा उसने, वेबसाइट वगैरह बनाना वगैरह। तो ऐसा नहीं कि जॉब्स बहुत आ गई है मार्केट में कि एआई वाले बंदे हायर हो रहे हैं हर जगह पे, ऐसा भी नहीं हो तो एक हाइप क्रिएट हुआ है मार्केट में कि एआई टूल्स बहुत अच्छे बन रहे हैं मार्केट में, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं जो पहले के लोग हैं, वही अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे, डेटा साइंस वाले या मशीन लर्निंग वाले लोग, ठीक है? तो एक्सपीरियंस के साथ-साथ हर डोमेन अच्छा है। आई एम वर्किंग एज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर विथ 3 years of experience. What to do next? Either go for cloud or SOC. See, totally your interest, Prashant. Okay. So if I'll be at your place and if I have worked as a network security engineer, if I know firewalls, if I know a lot of things, okay, then if I'm very confident about my skills, then I'll go for cloud security. But if I feel like my package is not good, if I'm on 4 lakhs, 5 lakhs, maybe I can go for cyber security role, but not SOC. I'll go for red team. Okay. बिकॉज़ Palo Alto वगैरह मैंने पढ़ लिया होगा, तो मैं डायरेक्ट रेड टीम वगैरह में जाऊँगा। Firewall also comes under blue team. So already you have blue team knowledge. Okay, so if you want to polish, you definitely go for the blue team program. But I'm just telling you what I'll do in my case. हेलो सर, मुझे कंपनी का नेटवर्क बनाना है, तो कोई टूल्स या डायग्राम बनाने के लिए लेकिन आईएसओ मीट होना चाहिए। यार देयर आर टूल्स इन द मार्केट यू चेक दैट माइक्रोसॉफ्ट का टूल आता है ना विजियो, ठीक है? तो ये विजियो ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट तो सारे सर्टिफिकेशंस रिक्वायरमेंट पूरी करेगा ना। सो इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर आई डोंट नो द प्राइस आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 10 to 20,000 ये वन टाइम परचेज इसका ये रहा 25,000 का प्लान है। तो अपनी कंपनी को बोलो भैया मुझे चाहिए खरीदो। तो इस पे पूरे नेटवर्क डायग्राम्स बनते हैं आपके। कंपनीज़ में यही यूज़ होता है, ठीक है? तो अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विजियो यूज़ होता है और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो एक ओमिग्राफल करके आता है, ऐसा कुछ टूल है, ओमिग्राफल, ठीक है? तो अगर आप मैक यूज़ करते हो कंपनी में तो
हम एप्पल में ये यूज करते थे ओमनी ग्राफल, तो इसके थ्रू हम नेटवर्क डायग्राम्स वगैरह ये सब बनाते थे। ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ग्राफाना। Okay, so next question. Sir, please let us know the order for routing switching engineer. Ashish, I've already told bro, please watch this video from the beginning. Your classes have 6 months time. See, I'm going to start my new batch, guys. Okay, if you wish to join, तो मेरा एक बैच शुरू हो रहा है, तो हम शुरू कर रहे हैं बैच ऑलमोस्ट 18 नवंबर से। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। तो उसकी डिटेल कुछ ऐसे है। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। So if you are already working as a network engineer, or see, I'm going to start with CCNA, then CCNP will taken by another expert, then I'll take CCNP interview preparation. Okay. And then there is going to be Palo Alto or FortiGate Firewall, whatever you want. So this is a blend of three programs into CCNA, CCNP, and Firewall. So I'm starting this batch from 18th November. Classes are going to be on just 2 days, Tuesday and Wednesday, and it's going to be from 9:30 p.m. India timing to 12. So 2.5 घंटे की क्लास होगी ट्यूसडे को, 2.5 घंटे की वेंसडे को, एंड you will be able to cover all CCNA, CCNP. So will be you can join an RC or Encore or both, because both modules are important. But if you are on tight budget, you want just one OSPF. Normally, people go for an RC because it has OSPF, BGP, MPLS, all that knowledge. And I'll be preparing you all for the interview, because once you learn CCNA, CCNP, I'll give you full-fledged 10 hours interview preparation, that exclusive what I have, how I got a job in Apple or Juniper Networks, ये सब मैं सिखाऊंगा इसके अंदर. And then you learn about Palo Alto Firewall. Okay, so it will take time. See, things take time. And if you don't have time, you join All Access Pass, because all these things are available in All Access Pass. तो अगर आपको लाइव नहीं करना है, मेरे वीडियोस बाय करने हैं, ओके, सो यू गो टू ओटीटी. So this bundle, I think you can get 3 to 4 thousand more discount on this. So इसके अंदर लाइक सीसीएन, सीसीएनपी, पॉल ऑल्टो, ओके, और जो भी, और हाउ टू सेट अप लैब्स, ये सारा पूरा बंडल है. 200 से ज्यादा घंटे का कंटेंट है ये. ठीक है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ, बिगिनर हो तो यार लाइव बैच लो. इफ यू आर working in a rotational shift, you still need a content, rather just buying for network engineer bundle, buy all access, because all access where you learn network engineer, but also you can learn cloud security or other things, advanced knowledge also. तो इसमें ये जो बंडल है ना, ये बहुत बढ़िया बंडल है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग. इसमें रियल कैसे ट्रबल शूट करते हो आप रियल वर्ल्ड में, ये रियल चीजों के ऊपर बेस्ड है ये वाला प्रोग्राम. ओके, सो दिस बंडल इज इन इंग्लिश, बट द बेस्ट पार्ट, हमने इसके अंदर ऑल एक्सेस हिंदी भी डाल दिया. So in Hindi, we have 15 to 20 courses are in Hindi, and 40 plus courses are already in English. So almost 50 plus courses are there in this bundle. Okay, so start with free trial, और टीम को बोलो डिस्काउंट वगैरह, तो वो अच्छा, मतलब 10-15% डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें. ठीक है, दिवाली थी तो दिवाली पे आप लोगों ने पता नहीं लिया नहीं लिया, तो दिवाली पे अच्छे ऑफर्स थे हमारे यहाँ पे. ठीक है, बट फिर भी यू कैन रिक्वेस्ट टीम that I am really interested. ठीक है. Okay, Shreya, I have 5 year experience in SOC. Want to learn more of cloud security. So, but the bundle program is only for see lab access. Shreya, see what networking is giving now. So that's the like if you see what quality trainer you are getting and what type of labs you are getting, you can pay extra and take the labs for 1 year. Okay, but there is a cost to it. If
because 6 months is enough time to practice the Azure portfolio. And what I recommend you, you join the batch. Okay, so do the labs properly. And once it is finished in 6 months, you can buy separately for that labs. Okay, that's what I wanted to say. I have 9 year experience working in a service provider and enterprise domain. Which course should be help to networking field? प्रशांत आप SD WAN firewalls ये कर सकते हो एंड उसके बाद नेटवर्क ऑटोमेशन कर सकते हो और नहीं तो सब छोड़ दो और क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हो ओके बट स्टिल यू नीड अ Palo Alto or kind of firewall knowledge so learn firewall and cloud security I think that's bundle going to be good for you sir I'll buy a FortiGate firewall व्हाट मॉडल शुड आई तो देखो शंकर वो फोर्टिनेट कंपनी से ही पूछो आप कि कौन सा मॉडल है मुझे सारे मॉडल नहीं याद बट उनका मैं कॉस्ट बता रहा हूँ 2-2.5 लाख रुपए में आपको अच्छा फायरवॉल दे देगा फोर्टिनेट मतलब 500-700 यूजर वाला क्योंकि 70-80 हजार में उनका 50-700 यूजर्स वाला मिल जाता है So does a recorded batch has doubt solving sessions? Shreya, see doubt solving for that we have built an AI tool inside that. Okay, so but yes, if you right now you are on YouTube and you are asking me questions, I'm replying you. This is like human interaction. You will definitely miss that if you watch videos only. But the best part whatever videos what we have given here it's live class recording so 90% of the doubts already asked by students so we are not a company who just create recordings in a studio we conduct live batches and the whole live batch recordings without edit we upload in the all access pass so are you getting so that you do not miss anything if a student is asking a question even you listen that in that recording so 90% of the time people don't have doubts and still if you have those 10-20% doubts you can still go and check the AI so go and use the trial na bro so use that trial. You will get to know, experience the quality, and if you like, yes, I like the topics, but I want live batch, then go for live batch. And then if you feel like all access is good for me, then you can go for all access pass. And by the way, the price what you see here, you can ask some discounts from my team. And this is 1 year, and every year we add almost 10 to 20 new technologies. So every year we add new and new technologies. So now, right now, we are working on Azure, more Azure programs. We are working on some security or DevOps or DevSecOps topics also. ठीक है तो अभी इसके अंदर वायरलेस टॉपिक ऐड होने वाला है ए ऑल एक्सेस में तो इसमें वायरलेस का एक बैच चल रहा है हमारा वो ऐड होगा ठीक है एक हमारा F5 का कंटेंट था हमारा LTM तो डल गया था उसके बाद GTM भी डल गया है और ASM भी डल गया तो LTM GTM ASM तीनों मॉड्यूल्स F5 में से आप समझ रहे हो लोकल ट्रैफिक मैनेजर ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए यूज होता है तो ये F5 के तो सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं ठीक है तो ऐसी अगर हम बात करें जूनिपर की तो जूनिपर के भी तीनों लेवल ऐड हो चुके हैं जीएनसीआई ए जीएनसीआई एस जीएनसीआई पी तो देखो हम बंडल बना रहे हैं ना तो वो नहीं है कि सिर्फ सीएसएन पी दे रहे हैं बंडल में सो वी आर वर्किंग ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स अगर मैं आपको फायरवॉल दिखाऊं अपने यहाँ के so if I show you on all these are in English by the way okay so this is all English content Hindi content is also available now see the firewall combo तो इसी बंडल के अंदर फायरवॉल कॉम्बो भी है तो Palo Alto firewall, Palo Alto Panorama, then you learn checkpoint firewall, Fortinet NSC4 and SC7, Prisma Palo Alto, ठीक है Zscaler is added, Sonic Wall is added, Sophos firewall is added, Wireshark tool is added, and also there was an interview preparation by an expert that interview preparation classes are also added. So can you see that when you go inside any bundle, so you are getting here almost 15 bundles which has more than 50 plus courses, and each bundle has almost in-depth detailed content. So if you see network automation, so you are learning Cisco SD-WAN, you are learning Cisco SD-WAN and Versa SD-WAN. So we are going to add Silver Peak also within next 3-4 months.
सो एसडी वैन सिस्को का भी आ गया, वर्सा का भी है, फोर्टिनेट का भी है इसके अंदर, और सिल्वर पीक मैंने बोल दिया हम ऐड कर रहे हैं। आई थिंक एक दो कंपनीज और है वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड दिस इज पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर कोर्स, एंड दिस इज डेवनेट एसोसिएट एंड डेवनेट कोर। ओके, कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव वर्क फ्रॉम होम। और ये कौन आया भाई, चंद्र? भाई इंटर्नशिप के स्पेलिंग तो सीखो थोड़े। इंटर्नशिप को इंटर्नशिप लिख रहे हो। ओके, तो भाई मेरे कुछ भी करो, पहले इंग्लिश अच्छी करो सारे, नहीं तो कुछ फ्यूचर नहीं है किसी का भी फिर। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे ना हम इस चैनल पे, या कि बिना इंग्लिश के चल जाएगा, राइट? यू स्टिल हैव टू लर्न लाइक बेसिक कॉम स्किल्स, ठीक है? तो एवरेज तो होना ही चाहिए ना आज की डेट में इंटरव्यू देना तो। अच्छा, उसके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, लाइक इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, so when you join our programs you can ask that I need a job oriented program, because in job oriented program we train you technical skills, com skills, build your resume, we apply your jobs, we try to help you to get a job. And if you do not get a job within few time period, 6 months to 1 year, so that job guarantee fees will be given back to you. Okay, so that programs are also available at networkings. So for today, I think that's enough. Next week, let's see if I have get a time. So if you want more sessions like us, okay, so if you want more session like this, okay, so just comment below. Maybe I will try to come oftenly. Okay, thank you. Bye bye. Take care.